Ladder Facts and Ladder Unfiltered channels made why there is so much hate for Ramayana. And again, I don't know. Again, casting is always iffy. I can understand casting being a problem because everyone has their own perspective on how the divine should look, about how these characters should be portrayed. Everyone has their own image in their head. Like, even for me, Sita did seem a bit off, but the others I don't really have much of a strong feeling towards other than her. So for me, it was just like, the hair's too curly. The hair's too curly. It doesn't seem like that's supposed to be it. But other than that, I was like, I don't really care about the casting. But again, a lot of people have issues with the majority of the casting. And apparently the CGI. I think the CGI is good. 4000 करोड़ का मैसिव बजट, नितेश तिवारी जैसा विजनरी डायरेक्टर और हमारी सबसे बड़ी धरोहर एपिक रामायण। देखो, जब इस ग्रैंड प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई ना, तो लगा कि ये इंडियन सिनेमा के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तो यूं ही तोड़ देगी। बट फाइनली जब इसका मोस्ट अवेटेड ट्रेलर ड्रॉप हुआ है तो इंटरनेट पे बवाल मच गया है। 4000 करोड़ रुपए लग गया इस फिल्म। The thing is like, I could understand the hate towards the Odyssey. Why? Because, well, the cast isn't Greek. And not even close to being Greek for the most part. And that's what I feel like. I think it should be portrayed by what's demographically in the area. Like in Ramayana, they're all Indian. They're all Indian. It's not American cast. They're all Indian. They're all Indian. So I think it's fine. I think it's fine. फिल्म के ऊपर यार फॉरेस्ट बना दिया है, बहुत ही गंदा शॉट लग रहा है वो, भाई असली और नकली साफ पता चलता है। ये रामायण का ट्रेलर नहीं है, रावण का ट्रेलर है, रावण का। मूवी की कहानी, मूवी का एक्शन, वीएफएक्स, सीजीआई। तो आज के इस डिटेल ब्रेकडाउन में हम एग्जैक्टली इसी को एनालाइज करेंगे। हम बात करेंगे उन टॉप सॉलिड रीजंस की जिसकी वजह से रामायण का ये ट्रेलर सोशल मीडिया पे बुरी तरह से ट्रोल हो रहा है। पर इसमें भी बात करेंगे कि हनुमान जी का कोई भी ग्लिम्स ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया। पर इसमें भी बात करेंगे कि क्या ये हिट जस्टिफाइड है या फिर सोची समझी एक Again, I guess some people have issues with the fact that Ram isn't as manly. Right? I guess a lot of people don't like that he's not depicted as manly, like in Bahubali, like the son and father were portrayed by the same person, and Parabas, I think that was the actor, but he was portrayed as manly. So I think people just have that in their head when even in like the old what was the children's show, the Nandera, like where there was the two white kids who went back in time to see the history, and even there they had him look clean shaven, they had him with long straight hair, they had him look more fair skin. They it's just like it, but for some reason most people now just think built guy. He needs to look like a built guy. Like, why? यार नैरेटिव इस फिल्म को बदनाम करने की साजिश। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको भी सोचने में मजबूर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैकलैश फॉर लुक एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। Alright, look and appearance. देखो, वाल्मीकि जी के रामायण में सीता जी को एक शांत अति सुंदर रानी की तरह दिखाया गया है, जिनके अंदर इमेंस इमोशन और इनर स्ट्रेंथ थी, पर वो कोई फिजिकल वॉरियर नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में उनके लिए तपस्विनी, चौरासिनी यानी कि बहुत प्यारी और मनमोहक हंसी वाली, वरारोह यानी कि बहुत ही उत्तम और सुंदर, अयोनिजा यानी कि जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि सीधा धरती से हुआ हो, कुछ इस तरह का वर्णन किया गया है। मैं खुद मिथिलांचल से हूँ और प्रिसाइजली मधुबनी से, तो मैंने नोटिस किया है कि जानकी जी के लिए सिया सुकुमारी जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। लेकिन इस फिल्म के जो ग्लिम्स सामने आए हैं, जो ट्रेलर में दिखा है, वो बिल्कुल ही अलग ही इंटरप्रिटेशन दिख रहा है। वो हाथों में तलवार लिए दिख रही है, उनका अटायर ट्रेडिशनल नहीं लग रहा। अब गुंथरा यानी कि घूंघट पूरी तरह से मिसिंग, और उनका मॉडर्न साड़ी वाला लुक और हेयर स्टाइल देखकर फैंस को लग रहा है कि ये हिस्टोरिकली और कल्चरली थोड़ा गड़बड़ तो है। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि स्मैश पैट्रियार्कल गैंग यानी कि सरल शब्दों में फेक फेमिनिस्ट को खुश कर रहे हैं। So maybe that's what I had issue with, was the hair. The hairstyle. I don't know, but she did seem off. It was primarily Sati that seemed the most off for me. Out of everything in the film, that seemed like the weakest portrayal
the weakest portrayal. के लिए मेकर्स ने ऐसा किया है। जो भी हो, लेकिन देखो ओरिजिनल टेक्स्ट से एक बहुत बड़ा डिपार्चर ये है कि लक्ष्मण रेखा वाले सीन के दौरान सीता जी को अपने बचाव में तलवार निकालते हुए दिखाया गया है। ट्रेलर में अगर आप 3 मिनट 41 सेकंड पे जाओगे तो आपको भी दिखेगा। एक और कंट्रोवर्शियल एडिशन है शूर्पणखा वाले सीन में सीता जी का होना। मतलब ट्रेलर में वो लिटरली राम जी से कहती है कि वो आप पे मोहित हो गई है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी उस पूरे एनकाउंटर के दौरान प्रेजेंट जरूर होती है पर एकदम साइलेंट होती है। शूर्पणखा को टीज करने वाले सीन स्ट्रिक्टली राम और लक्ष्मण के बीच ही होना चाहिए था। और लोग गुस्सा इस बात का भी आ रहा है, रिएक्शन ये आ रहा है कि सीता इज टेलिंग राम टू लाइक सम कॉलेज गर्ल लाइक दैट शी लाइक्स हिम। सीरियसली डूड, इज दिस सम मसाला मूवी? अब इन सब ऑल्टरेशन को देखकर लोग फिल्म मेकर्स को अक्यूज कर रहे हैं कि वो सीता जी के फंडामेंटल कैरेक्टर्स को ही बदल दे रहे हैं और लोग इसे रामानंद सागर जी के रामायण के सामने बिगेस्ट डाउनग्रेड भी बता रहे हैं। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी कह रही है कि ये वॉरियर सीता कॉन्सेप्ट शायद वाल्मीकि जी के वर्ष से नहीं बल्कि अमीश त्रिपाठी के नॉवेल से इंस्पायर्ड है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। ऊपर से शूर्पणखा वाली कंट्रोवर्सी में कुछ लोग कह रहे हैं कि द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ रामायण शुड बी जेल्ड फॉर कास्टिंग दिस व्हाटएवर साई पल्लवी एज सीता एंड साइडिंग रकुल प्रीत फॉर स्मॉल रोल। देखो लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा Yeah, it's funny because I thought the roles should have been changed. But again, I can kind of get that because I don't know the entire histories except from what I saw in like the kids shows, the kids movies that I watched with my wife. So that's my depiction of most of it. So seeing it brought to life is something completely different. And I don't know the ins and outs. I mean, like the shooting down of the vulture, like that, it better be a vulture. Like the fact that it should be a carriage that is being she's taken on, like all the little nuances that keep it more realistic and you don't end up with an Adi Purush again, because that was an embarrassment. Because I understand, like, you want the writers to have the creators to have some kind of free will, but when it's kind of culturally important, you want to keep it relevant and true to the source material. If you do too much of your own kind of creativity into this, like the telling, you're going to make people unhappy. You have to stay as committed as possible to it. Like in Lord of the Rings. No black people in Lord of the Rings, unless you're talking about the orcs and goblins. Why? Because there were no black people in Tolkien's Lord of the Rings. So why would they be there? You just have to be faithful to the source material. And everyone loves Lord of the Rings. Everyone loves, well, at least they used to love Lord of the Rings, except for the fact that there were no black people in it, because now they'll complain about that. So you have to always be mindful of what is this story trying to tell, and how can I tell it as faithfully as possible without putting any of my own biases into it. And that's how Lord of the Rings became so popular, is they went into it not trying to put their own perspective into it. It wasn't until The Hobbit and Rings of Power where it really went off the rails. But at least originally it started just wanting to be faithful to the source material, and that's what it should do. That's what it should do. Changing a piece of dialogue here and there, I don't know, because I don't know all the source material, but it can affect people. It can affect people because one person saying something can change the entire narrative of everything. It really can. It really can. Just like changing someone's race from white to black can definitely change the meaning of a scene, from kids just being bullies to kids lynching the only black kid in the school. I'm talking about Harry Potter. जब श्री राम से मिली तो उन्हें आकर्षित करने के लिए उसने अपना रूप बदल लिया और अत्यधिक सुंदर स्त्री बन गई। लेकिन वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 17 में महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम की सुंदरता और शूर्पणखा की कुरूपता को बहुत ही क्लियरली तुलना की है। श्लोकों में बताया गया है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे। श्री राम का चेहरा बहुत सुंदर था, जबकि राक्षसी शूर्पणखा क्लियरली अगली और डरावनी थी। राम जी की आंखें बड़ी और अट्रैक्टिव थी, जबकि शूर्पणखा की आंखें भद्दी और डरावनी। हालांकि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण और यहाँ तक कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस में भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि शूर्पणखा ने अपना रूप बदला था। ऐसा मेंशन है कि वो अपने उसी डरावने और असली रूप में राम जी के पास मैरिज प्रपोजल लेके गई थी और श्री राम ने उसके अगली होने के बावजूद बहुत ही सहजता और परिहास के साथ उसके प्रपोजल का आंसर दिया था। महारानी कैकेयी को लेकर भी बात हो रही है। महारानी कैकेयी एक्चुअली अयोध्या की सबसे फेवरेट और स्टाइलिश रानी थी। उनका रुतबा ऐसा था कि राजा दशरथ उनकी बात तक नहीं टाल पाते, पर उनका गेटअप देख के ऐसा लग रहा है कि नमित मल्होत्रा ने साढ़े बजट वीएफएक्स और लीड एक्टर्स की Like I think it just looks amazing. I think it looks amazing, but
I don't know if everything he's saying is even close to accurate. Because I get the feeling that a lot of the stuff he's saying might just be bullet points he looked up real quick on Wikipedia. I think that's kind of what it feels like. The way he's reading it sounds like he's reading a Wikipedia article. I mean, I don't want to be rude. I don't want to be rude to him, but it kind of sounds like that. But then again, I don't know. I could literally be taking in. I don't want to take it all in as factual, especially when it comes to something like this. It's better to, well, honestly, it's better to read the source material myself and develop my own depiction of it. But then I'd rather watch the movie. Because again, this just looks amazing. It absolutely looks spectacular. फीस में उड़ा दिए और वार्डरोब डिपार्टमेंट को सिर्फ 1500 रुपए देके सरोजनी नगर भेज दिया। एक सिंपल मरून साड़ी, बेसिक ग्रीन ब्लाउज और ज्वेलरी के नाम पे एकदम सन्नाटा। मतलब ये अयोध्या की रानी कम और अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से ऑर्डर की हुई सिंथेटिक साड़ी ज्यादा लग रही है। और लोग एग्जैक्टली ये बात कह भी रहे हैं कि व्हाई डज कैकेई लुक लाइक शी इज अ मिडिल क्लास लेडी फ्रॉम सम रैंडम वेब सीरीज। बट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है रणवीर कपूर। देखो, श्रीराम के कैरेक्टर में एक ठहराव, अथॉरिटी और डिवाइन वेट होना चाहिए। पौराणिक हिंदी या संस्कृत के डायलॉग बोलते वक्त उनकी एक स्पेसिफिक डिक्शन की जरूरत होती है, जैसे शरद केलकर ने आदिपुरुष और बाहुबली की डबिंग में किया था। फिल्म जैसी भी हो, डबिंग मस्त थी। ऑडियंस का कहना है कि रणवीर की आवाज में वो मॉडर्न साउथ बॉम्बे वाला अर्बन टच है। जब वो ट्रेलर में अपने डायलॉग्स बोलते हैं तो उनका वो टोन ब्रह्मास्त्र के शिवा जैसा साउंड करता है। मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला बैरिटोन और डेप्थ लो। See, I think the benefit for me is like I don't notice any of these tones. I don't notice any of these like little nuances that, again, well, those in India will absolutely be able to notice. For me, I look at him as the character he's supposed to be portraying. And, well, he looks like well, what would I change? What would I change? I don't know. I don't know. Because he looks like the character that I saw in the cartoon. Close enough, at least. Close enough, at least. So for me, it's not that big of a deal. And for me, I mean, I'm going to be watching it with subtitles. And so the language could mean nothing to me. Absolutely not. It's not important to me. It's just I'm going to be reading subtitles the entire time. Subtitles the entire time. वो को मिसिंग लग रहा है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि People didn't like Sita casting because she doesn't have the sharp look. But yeah, the clothes of queens look very bad. I don't know. I think the queen looks fine. Because I think that scene is done like in the middle of the night where it's like... Is she supposed to be dressed elegantly in the middle of the night as she's finding out? Like, no. If it was in the middle of the day, yeah, she should be dressing like the way she's supposed to be portrayed to the public. That's how she should dress, like 24/7. Like back in the day, royalty would always dress the part when they would set foot out for like either a meeting or like seeing the masses, or not a meeting, but like a council meeting or whatever, or going to the masses. But in your own private chambers, in your own little atelier, you're not going to dress over the top. You just want to dress comfortably. So for that, it's not that big of a deal. As long as every single time she's outside, she's dressed the part of as a queen, then it's okay. But if she's dressed like that the entire time, then it's going to be a problem. But I think it was fine because it was like, it's nighttime. You expect her to put on all that heavy jewelry in the middle of the night? You expect her to wake up all her maids in the middle of the night? Well, maybe. But yeah, I thought it was okay. रणवीर कपूर's dialogue delivery feels more suited to a modern action romance than a Lord Ram. साई पल्लवी doesn't look convincing as Sita in the trailer, at least from this first impression. देखो, वैसे तो भगवान omnipotent है, हर जगह विद्यमान है। फिर भी जब हम मोहित रैना को देखते हैं तो वो डिविनिटी फील होती है। सौरभ राज जैन को जब हम देखते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं। बट रणवीर के केस में ये चीज थोड़ी मिसिंग तो लगती है। अरुण गोविल जी के लिए लोग क्या कह रहे पता है? दशरथ इज गिविंग मोर ऑफ अ राम वाइब देन राम हिमसेल्फ। देखो, कुछ लोग आज भी रणवीर को उस कंट्रोवर्सी के लिए ट्रोल कर रहे हैं। बिग बीफ गाय वाली बात कर रहा हूँ। I don't mean to be that guy. I mean, call me racist. But to me, they all look pretty similar. They all had the same aesthetic. You clean shave them, you get the long hair, they all look the same. The clothes are too normal. Even normal clothes for night for royalty thousands of years ago were different. They should have tried to differentiate them. Yeah, I guess so. They should have made them a little more fine, elegant, at least on the pattern of the hem. The hem, I think it would be. But
because again, it just looks like a regular night shirt, a regular sari that someone would put on and walk outside. But yeah, I think they could have spent a little more detail, maybe some gold filigree. It would have probably looked a little better. लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं है, जैसा कि नमित मल्होत्रा को सदगुरु ने भी पहले कहा था कि एक्टर ही सही, अगर आप श्री राम को प्ले कर रहे हो तो कुछ तो सिमिलैरिटीज होनी चाहिए. So the people that have to play these, you know, huge, who have this huge responsibility to fulfill in the shoes of, you know, like a Rama or a Hanumana, how do we try and ensure that they are seen as actors and not as becoming a Maryada person? If you act like Rama in a movie, then I expect at least you have some gentleness. But it's unfair to the actor because after all, for him it's a profession. But hope acting like Rama brings some elements of Rama into the actor, which will be wonderful for him. But I think the actor and the director and everybody making Ramayana should imbibe a little bit of Rama's quality. श्री राम के अलावा यह शायद रावण लोगों को पसंद तो आए, लेकिन हिंदी उच्चारण कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आया. राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा. ना राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसका अपमान. और रावण से याद है कि रावण की आर्मी अब मीम मटेरियल बन गई है. ट्रेलर में एक वाइट शॉट है जहां पे रावण की आर्मी दिखाई जाती है. सोशल मीडिया पे ऑडियंस इसका मजाक उड़ा रही है और इसको कॉलोनी ऑफ बीज मधुमक्खियों का छत्ता बुला रही है. कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं, कुछ लोग उस पिक को इम्प्रोवाइज करके तुर्रम खा बनने की कोशिश कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि इट्स नॉट अबाउट बजट, इट्स अबाउट पैशन एंड विजन ऑफ डायरेक्टर. सैडली नितेश तिवारी डजंट हैव द विजन दैट एसएस राजामौली है. आप खुद देख लो ये पोस्ट. असुर या डीमन के जो लुक है, जो क्रिएचर्स के लुक है, वो बहुत ही कार्टूनिश अभी भी लग रहे हैं. कोई कह रहा है कि हल्क स्पाइडरमैन का प्रमोशन करने इंडिया आया था, लगे हाथ डीएनईजी वालों ने उससे भी एक दो सीन शॉट करा लिए. फिल्म को एक ग्लोबल एपिक की तरह मार्केट किया गया है, लेकिन ऑडियंस का मानना है कि ये स्क्रीन पर ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा. इसी के साथ साथ एनडीटीवी का भी एक पोस्ट पढ़ रहा था मैं, इन लोगों ने भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है. दरअसल Most people who have seen the Ramayana didn't just watch one version. They often added stories from other books, which make it softer and more loving. But the original book isn't like that. Also, this YouTuber does not really do research. What he is saying, points are meaningless if he has read books. Well, that's what I was saying before. A lot of it just sounds like he's reading a Wikipedia article. Like he's reading a Wikipedia article and citing sources of various different texts to try and formulate an argument, when from my understanding, my layman's understanding, is this is all one battle. Or actually one event. It's like Ram when he gets in a relationship, he gets banished, she gets kidnapped, he goes and fights Ram to get Sita back, brings, like, all that is all one person. It's all basically one story. It's all one story. So why are you pulling from various different texts to try and formulate an argument on that one story? Go to the original text for that one story. Unless it's like what is it in what is it? I'm trying to think. The like in the Bible, in the New Testament, there's like 4 books. The book of John, book of Peter, the book of Luke, Matthew, Mark, Luke, and John. Yeah, all 4 of those books literally are exactly the same, just done from a different perspective. Unless it's like that. But I don't think it is. It doesn't sound like it is. It sounds like he's going from different texts entirely to try and formulate the argument rather than just going to the original text. Pretty sure during fight, Rama killed 14k demons. He was injured, all over, tired, and was also a bit arrogant in original Ramayana. Because in original text, he's more human and shows more emotion. I mean, yeah. But that's the thing. It's been embellished on over the years. But yeah, that's why it's just like, it sounds like he's reading a Wikipedia article and using all these other texts to formulate his argument instead of just talking about the text itself.
एक हिस्टोरियन है डॉक्टर रुचिका शर्मा। उन्होंने ट्रेलर देखा और ट्विटर पे एक ऐसी डिटेल पॉइंट आउट कर दी जिसने सबका ध्यान खींच लिया, और वो है रामायण की ज्वेलरी की हिस्ट्री। डॉक्टर रुचिका का कहना है कि ट्रेलर में सीता जी ने जो कुंदन का चोकर यानी कि गले का हार पहना है वो उस जमाने के हिसाब से एकदम हिस्टोरिकली गलत है। उनके अकॉर्डिंग वाल्मीकि जी ने जब रामायण कंपोज करी थी तब ऐसे हैवी सोने के मॉडर्न डिजाइन होते ही नहीं थे। गोल्ड ज्वेलरी उस टाइम बहुत ही रेयर थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हालांकि कुंदन आर्ट इंडिया में पहले से आया था, पर इसको पॉपुलर मुगलों ने बनाया था जो रामायण काल के बहुत बाद था। और सिर्फ सीता जी नहीं, राम जी के गहनों पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रेलर में श्री राम ने जो ब्रेसलेट पहना है उस पे फिलिग्री एकदम बारीकी और जालीदार नक्काशी का काम दिखाया गया है। अब हिस्टोरियन डॉक्टर रुचिका का कहना है कि ये फिलिग्री टेक्निक तो इंडिया में 11th सेंचुरी में आई थी। तो सोचने वाली बात ये है कि रामायण एरा में ये ब्रेसलेट कैसे आ गया। गुड क्वेश्चन। देखो, इन ज्वेलरी से थोड़ी मुझे वो इंडोनेशियन रामायण वाली वाइब आ रही है। आपको क्या लगता है, आप बताना। इसके अलावा कपड़ों पे भी कोई डर्ट नहीं है। फॉरेस्ट की हट ऐसी लगी है जैसे किसी प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन टीम ने बनाई है। ट्रेलर में लॉर्ड हनुमान यानी कि सनी देओल की एक भी झलक नहीं दिखाई गई है। अब इस पे बात कर ही लेते हैं कि क्यों कोई भी ग्लिम्स नहीं दिखाई गई ट्रेलर में। देखो, इसके पीछे कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि कहानी का एक्चुअल टाइमलाइन और मेकर्स की एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी छिपी है। अगर हम ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की बात करें तो हनुमान जी और श्री राम का मिलन सीता हरण के बाद किसी किंधा में ऋषिमुख पर्वत पे होता है। क्योंकि इस फिल्म का पहला पार्ट सीता हरण के आसपास ही खत्म होने वाला है, इसलिए हनुमान जी के कैरेक्टर का मेजर पोर्शन अभी ऑडियंस से डेलिबरेटली छिपा के रखा गया, यानी कि उनकी ग्रैंड एंट्री और मेन रोल आगे की स्टोरी के लिए बचा के रखा गया है। अब देखो, सस्पेंस बना। Historical people can't really talk on this topic. Again, I'm not entirely sure. When it comes to that, you kind of, because I think it should be culturally accurate, but people's idea of what a queen should look like, what a princess should look like, what a king should look like, will always be derived off current media, and I think they're just trying to make it relevant so people can understand people's standing without having to do an entire history lesson for everyone going through things. But yeah, most historians I don't think have the right to speak on things. That's just the way of it. Also, the movie owner said it's one book, but when he did talk to YouTubers in private, he said it's from 2 books and some he points. Oh, okay. Well, I guess that kind of makes sense if he's trying to flush it out a bit more, trying to add more screen time or run time or get something about an extra character. But yeah, I don't know. I mean, just doing Ram's story would be enough. रखने का और कहानी को ऑथेंटिक रखने का ये मेकर्स का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, जो कि बहुत सही भी है। बट यार, इन सब के बावजूद रामायण का क्या क्रेज है वो आपने नोटिस किया? आज के टाइम पे जब हर हफ्ते नई फिल्म आती है और हर रोज के अखबार की तरह चली जाती है, रामायण का क्रेज एक अलग लेवल पे है। बचपन में जो कहानी हमने टीवी पे देखी थी, well, yeah, because I've been excited for this ever since I saw the original. It was like going through a nebula, and then it showed you just the title of it at the end. It was just going through a nebula. I was like, that looks amazing, and it was Hans Zimmer's score. And then I see the teaser for it, then this comes out, and I'm just like, yeah, it just looks great. It just looks great. I don't understand the hate. ये किताबों पढ़ी थी, आज वही कहानी नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ग्रैंड विजन के साथ बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं, और ऑडियंस के अंदर इस एपिक को लेके आज भी वही श्रद्धा और वही दीवानगी। और यही वजह है कि रिलीज से महीनों पहले इसने बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस और ट्रेड रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। जरा इस प्री सेल हाइक के स्केल को इमेजिन करिए। फिल्म अभी आई भी नहीं है और टी सीरीज ने इसकी म्यूजिक राइट सीधा 75 करोड़ में खरीद लिए, जो कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी म्यूजिक डील क्रैक हुई। इससे पहले की डील जैसे धुरंधर के 55 करोड़ के रिकॉर्ड को भी बहुत पीछे छोड़ दिए गए। एक तरफ जहां आजकल मेकर्स जल्दी से ओटीटी डील्स लॉक करने के पीछे भागते हैं, वहीं प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का कॉन्फिडेंस इतना सॉलिड है कि उन्होंने इसके दोनों पार्ट्स के लिए 700 करोड़ के मैसिव ओटीटी डील को भी ठुकरा दिया है। वो ओटीटी राइट्स के लिए कम से कम 1000 करोड़ तक का एक नया बेंचमार्क सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी की ग्लोबल रीच का अंदाजा आप इस हिस्टोरिकल मूव से लगा सकते हो कि सोनी पिक्चर्स के साथ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का टाई अप किया जा रहा है। इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। रामायण का ट्रेलर हॉलीवुड के मैसिव रिलीज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ग्लोबली थिएटर्स में अटैच किया गया है, और ट्रेलर लॉन्च करने का तरीका भी एकदम डिवाइन और आउट ऑफ द बॉक्स था। मेकर्स ने एक नया ट्रेंड सेट किया। ठीक ब्रह्म मुहूर्त पे 30 जुलाई को सुबह 4:15 पे ट्रेलर ड्रॉप किया गया, जिसने आते ही इंटरनेट पे पूरी तरह से डोमिनेंस बना ली। देखो, मैं फिर से कहूंगा कि स्क्रिप्चर बेस्ड प्रोजेक्ट बहुत ही रिस्की होती है। ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते टाइम स्लाइटेस्ट डिजाइन या टोन मिसमैच भी लोगों को डायरेक्टली और पर्सनली ऑफेंसिव लग सकता है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि शायद यहाँ वही चूक हो चुकी है। ये ओवर द टॉप वीएफएक्स हेवी ट्रीटमेंट, हॉलीवुड लेवल के वेस्टर्नाइज्ड राक्षस डिजाइन, और सबसे बड़ा पॉइंट एक क्लियर ऑरा इंबैलेंस स्क्रीन पर कहीं ना कहीं रावण
रावण का स्वैग और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन लॉर्ड राम की कामनेस और डिवाइन प्रेजेंस पे भी भारी पड़ता दिख रहा है। मेकर्स ने मैसिव स्केल दिखाने के चक्कर में जो स्टाइलिश लिबर्टीज ली है, आज की ऑडियंस उसे क्लियरली मर्यादा से बाहर मान रही है। इसलिए सोशल मीडिया पे जो भी कुछ हो रहा है उसको सिर्फ ट्रोलिंग कहना गलत होगा। ये ट्रोलिंग सिर्फ फिल्म की नहीं है, बल्कि एक डीप इमोशनल लेवल पे हो रही है। लोग एज अ मूवी बफ डिसअपॉइंट नहीं है, बल्कि एज अ डिवोटी हर्ट फील कर रहे हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स इस हेवी बैकलैश को कैसे हैंडल करते हैं और क्या फाइनल मूवी में कुछ बदलाव। See, that's just the crux of the argument, because no matter what, when it comes to something, you'll never make them happy. You'll never make them happy. It's the worst part about it. It's the worst part about it. Just stick to animation, I guess, at this point. Just stick to animation. But because that's the thing, I am looking forward to it. I think a lot of people are excited for it. I think a lot of people understand that there will be some liberties taken, but they will be done. Like, most people just assume they will be done with respect and in accordance with what is at least written in one of the multitude of the scriptures, right? You would at least hope that that's the case. So you go into it just looking forward to it. Now, if you go to it and it ends up becoming another Adipurush, then you can start speaking ill of it. Of course, everyone knew Adipurush was going to be an absolute piece of garbage just by seeing the trailer. I mean, they were flying a bat instead of his carriage. I mean, come on. It was just the whole thing was just so stupid, so freaking stupid. I knew more than that freaking film did. I could have directed a better movie than that. I would have just turned the animation into a live action. That's what I would have done. देखने को मिलता भी है या फिर नहीं। आप लोगों का इस पूरे कंट्रोवर्सी पे क्या टेक है? क्या ऑडियंस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है या फिर उनका गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है? मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब वाले बटन दबाओगे तो वहां से एक आवाज आएगी। Oh my gosh. I just hope they don't try to whitewash Ravan's character and show how cruel he was. Yeah, they should show like the absolute evil. Like, one thing I don't like, especially in modern cinema, is when they try to give the evil character some kind of sympathetic reason, some kind of, oh, he's evil, but he was pushed into this. No. Revan's supposed to be like quintessential evil. Quintessential evil. So just keep him quintessential evil. Like, it's that simple. It's not that hard. It's not that hard. But they're probably gonna, if they create a past about how his heart was broken and he's been trying to seek love again, like, you're gonna lose everybody. You're gonna lose everybody. But yeah, I mean, as long as they keep it faithful, you'll win everyone over. You'll win everyone over. It's the fact that I have a feeling they're not gonna keep it there's some people who are going to look way too far into it, which is going to cause a problem. Levi, the problem is changing key events and story arcs of characters like OG has many things, like Revan is 1,000 times of combination of Thanos, Doctor Doom. He was a cosmic tyrant. Yeah. I mean, again, there's going to be problems. There's going to be problems that arise from it, but I'm not entirely sure. We'll see what happens. I'm just looking forward to it. If it comes out and is great, fabulous. If it comes out and is just not what I was expecting, it's like, well, that sucks. I still think it's going to be pretty good. But I'm not entirely sure. You never know. You guys get a video? Don't forget to like and subscribe. Wait like that.